तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में। आज हूँ तमने दोस्तों एवा गुजराती स्टाइलिश फॉन्ट आपवानो छूं के जेनो तमे यूज यूनिकोड पेडनी एप्लिकेशन वगर करी सको छो। ठीक है दोस्तों, तो सौथी पहला आपणे पिक्सेलैबनी एप्लिकेशन अंदर हूँ तमने अहींया बतावी दऊं एबी फॉन्टनी अंदर माय फॉन्ट में। तो तमे दोस्तों अहीं जोई शकशो आ छे आपणी पासे 70 जेटला गुजराती स्टाइलिश फॉन्ट के जेनो तमे यूज करशो तो तेनी अंदर तमारे कोई यूनिकोड पेडनी जरूर नहीं पड़े। यूनिकोड पेड में शुं थतुं हतुं के आपणे जे कंई लखવું હોય ते आपणे यूनिकोड पेडनी अंदर लखी अने तेनो कोड लई अने तेनी कॉपी करी अने आपणे पिक्सेलैबनी अंदर पेस्ट करी अने आ फॉन्टनो यूज करता हता। ते दोस्तों तमे नीचे जो आ जे फॉन्ट छे जेनो आपणे यूज करता हता आ फॉन्टनो पण आपणे विडियो आपी दीधो छे। ठीक छे दोस्तों, आ जे फॉन्ट छे ते 160 प्लस स्टाइलिश फॉन्ट छे अने आ 70 जेटला फॉन्ट एवा छे के जेनी अंदर तमारे यूनिकोड पेडनो यूज नहीं करवो पड़े। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करे ते पहला जो तमे मारी चैनल पर नवा आव्या होय अने हजी सुधी मारी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी तो तेने सब्सक्राइब करी लो, तेनी बाजुना बेल आइकन ने प्रेस करी लो जेथी करीने मारो नवो कोई विडियो अपलोड थाय तो तेनी नोटिफिकेशन सौथी पहला तमने मळी जाय। तो दोस्तों हूँ तमने बतावी दऊं सौथी पहला अहींया जे न्यू टेक्स्ट छे त्यां डबल क्लिक करी अने आपणे अहींयाथी दोस्तों अहींया हूँ गुजराती कीवर्डनी अंदर लखूँ छूं। तमे जोई शकशो जय गरवी गुजरात आटलू मैं लखी लीधुं, त्यारबाद तेने करी लईए ओके। तमे दोस्तों अहीं जोई शको मारुं जय गरवी गुजरात लखीने मैं डायरेक्ट लीधुं छे, आनी अंदर कोई मैं कोडनो यूज कर्यो नथी। हवे डायरेक्ट अहीं जईशुं आपणे फॉन्टनी अंदर अने त्यां माय फॉन्टनी अंदर तमे दोस्तों जोई शकशो अहींया हूँ अहीं क्लिक करूँ छूं, तमे उपर जोई शकता हशो के तेनी स्टाइल ऑटोमेटिकली चेन्ज थई रही छे। ठीक छे दोस्तों, त्यारबाद ओके करीने तमने बतावुं तो तमे जोई शकशो ते स्टाइलिश थई गयुं छे। मतलब मारे क्यांय यूनिकोड पेडनी जरूर पड़ी नहीं। तो आवा स्टाइलिश फॉन्ट आज हूँ तमने आपी रह्यो छूं। तो तेना माटे तमारे सिंपल शुं करवानुं छे, आ विडियोना डिस्क्रिप्शन अंदर जवानुं छे ज्यां मैं तमने लिंक आपी छे मीडिया फायरनी, तेना पर तमारे सिंपली क्लिक कर लेवानुं। ते लिंक पर दोस्तों तमे जेवुं क्लिक करो तमने अहींया लिंक मळी जशे गुजराती नवा फॉन्टनी, तेनी अंदर पर तमारे क्लिक कर देवानुं। दोस्तों तमे जेवुं तेना पर क्लिक करशो एटले आपणी सामे डाउनलॉड थवानुं शरूआत थई जशे अने तमारे तेने सौथी पहेला डाउनलॉड करी लेवानुं। ठीक है दोस्तों, ते जेवुं डाउनलॉड थई जाय त्यारबाद आपणे आगळनी प्रोसेस करीशुं। तो तमे जोई शकशो मारा 14 MB नी ते लिंक छे ते आपणे डाउनलॉड करी लीधी छे। तेना पर दोस्तों आपणे जेवुं क्लिक करीशुं एटले आपणे तेने अनजीप करवानुं छे। दोस्तों आ एक जीप फाइल छे, तेने अनजीप करवा माटे हूँ अहींयाथी जेड अचीवरनो उपयोग करी रह्यो छुं। तमे तमारा डायरेक्ट तमारा मोबाइलनी अंदर जो कॉम्प्रेस थतुं होय तो तेने तमे डायरेक्ट त्यांथी पण तेने अनजीप करी शको छो। અને જો તમારાથી તે ના થાય તો તમારે જેઆરએચઓની એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી લેવી। તો જેવું આપણે જેઆરએચઓની એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે તે તમામ ફોન્ટ અહીંયા આ રીતે તમને અહીંયા દેખાવા લાગશે। તમે જોઈ શકશો दोस्तों મારા બધા જ ફોન્ટ અહીંયા આવી ગયા છે। ત્યારબાદ તમારે શું કરવાનું છે, 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ત્યારબાદ મલ્ટી સિલેક્ટ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીને આ જે ડબલ રાઇટનું નિશાન છે તેના પર ક્લિક કરીને સિલેક્ટ ઓલ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। સિલેક્ટ ઓલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે दोस्तों જોઈ શકશો આ રીતે બધા જ ફોન્ટ સિલેક્ટ થઈ જશે। ત્યારબાદ नीचे तमे जो तमने एक राइटનું निशान देखाई रह्युं छे त्यां क्लिक करवानुं, त्यारबाद उपरનું निशान तमने जे देखाई रह्युं छे त्यां क्लिक करवानुं। त्यारबाद तमारे कोईपण एक फोल्डर क्रिएट करवानुं छे तो तेना माटे प्लस पर क्लिक करीने अहींयाथी न्यू फोल्डर पर क्लिक करी अने तमने जे कोई सारूं नाम लागे ते तमारे अहींया सौथी पहेला लखी लेवानुं छे। ठीक छे दोस्तों, जे रीते दोस्तों हूँ अहींया लखी लઉં છું गुजराती नवा फॉन्ट जेथी मने याद रहे। ठीक है दोस्तों, हूँ आ लखी રહ્યો છું फॉन्ट मैं लखीने ओके कर्युं। त्यारबाद तमे जुओ मारुं फोल्डर क्रिएट थई गयुं। त्यारबाद तमने नीचेनो जो ऑप्शन देखाय छे त्यां तमारे क्लिक करवानुं। त्यां दोस्तों तमे जेवुं क्लिक करशो एटले तमारा बधा ज फॉन्ट त्यां अनजीप थईने आवी जशे। तो मारा बधा ज फॉन्ट अहींया अनजीप थईने आवी गया छे। ठीक है दोस्तों, हवे आपणे आनुं कार्य थई गयुं पूरुं। हवे अहींयाथी जवानुं बहार अने हवे जईशुं आपणे पिक्सेलैबनी अंदर। तो दोस्तों पिक्सेलैबनी अंदर हवे आपणे तेने एड करी देवाना छे। तो एड करवा माटे सिंपली बधाने आवडતું જોઈશે પણ ન આવડતું તે દોસ્તોને હું સમજાવી દઉં। તો તેના માટે તમારે શું કરવાનું, અહીંયા જે એબી ફોન્ટ લખ્યું છે તેના પર જતા રહેવાનું, ત્યારબાદ જે માય ફોન્ટ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું। ત્યારબાદ તમને જે પ્લસ આઇકન દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને दोस्तों તમે જે ફોલ્ડરની અંદર તમારા એ ફોન્ટને સેવ કર્યા હોય તે ફોલ્ડરને સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા શોધી લેવાનું છે। ઠીક છે दोस्तों, તો તમે જોઈ શકશો મેં આની અંદર જે ફોન્ટ મેં એડ કર્યા હતા તેનું મેં નામ રાખ્યું હતું ગુજરાતી નવા ફોન્ટ, તો તેને હું અહીંયાથી સૌથી પહેલાં શોધી લઉં। તો दोस्तों તમે વાંચી શકશો તે ફોલ્ડર અહીંયા છે ગુજરાતી નવા ફોન્ટ, તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા જે એડ ડાયરેક્ટરી લખ્યું છે તેના પર તમે दोस्तों જેવું ક્લિક કરો એટલે તમે જોઈ શકશો અહીંયા બધા જ ફોન્ટ આપણે અહીંયા આવી જાય છે। ઠીક છે दोस्तों, અને આ ફોન્ટનો યુઝ કરવા માટે તમારે કોઈ પણ યુનિક કોડની જરૂર નહીં પડે। તો જો दोस्तों તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।